Good morning, everyone. I'm Dr. Sukhwant Singh, Associate Professor at SIRTS Pharmacy of the SAGE Group. I welcome you all to the class of Medicinal Chemistry. Today, the topic that we are going to start today is anti-diabetic agents. And I'm going to start this topic with a fact. This fact is quite disturbing, but since we are all medicinal chemists and we are aiming for a better world for all, let us first decide what are the learning objectives of this class. We are going to define diabetes and its types and causes. We will aim at describing the role of insulin in the body and the disease conditions that are associated with it. We will define antidiabetics and categorize them on the basis of chemical class. Then I'll go on to explain various strategies that are useful in the treatment of hyperglycemia. We will also describe the mechanism of action of various classes of oral hypoglycemic agents. And finally, we will discuss the structural activity relationships of sulfonylureas and also list the latest drugs in the class of antidiabetics. So, dear friends, the topic that I started off my talk, I said that it is a disturbing fact. The disturbing fact is that India is supposed to be the diabetes capital of the world. That is, the population of India is prone to diabetes, and such a large population of Indians will be diabetic in the coming years that diabetes is going to be one of the chief ailments that Indians are going to face. And considering the quantum of Indian population, the most number of diabetic patients across the world will be in India. Having said so, that India is going to be the diabetic capital, this also provides an important role for the pharmacists of India, because we know that the problem that we are going to have is diabetes. And as a medicinal chemist, it also gives us an immense potential to develop drugs in the category of diabetes. My dear friends, diseases are classified into various forms, and among the life-threatening diseases and among the serious type of diseases, we classify diseases as either morbid disease or mortal disease. Now, what do you mean by a morbid disease and what do you mean by a mortal disease? Basically, mortal disease is a disease which leads to the death of a patient, whereas morbid disease is a disease in which the patient cannot lead a normal life and will have to live with the disease for the rest of his life with most of his functional impairments, right? And diabetes is such a disease in which the patient does not die after contracting the disease, but patient can live long, but the patient will not have a normal progeny or will not have a normal life span after being contracted with disease, and there are going to be a lot of repercussions, or many organs, multiple organs are going to be affected because of this disease. When I say multiple organs are going to be affected, I would like to propose a few theories wherein I'll discuss with you all that diabetes not only causes the imbalance of glucose in the body or the metabolic disorder of the glucose maintenance in the body, but I would also like to point out, and I will also like to discuss with you the connections of other diseases with diabetes mellitus as such. So before we go into all those discussions, I would start off my class with the first organ, which is of prime importance in the disease of diabetes, and the organ is called the pancreas. Pancreas is a very important gland of the body, and basically this gland is a myxocrine gland. We have studied in anatomy physiology that glands are of three types: endocrine glands, exocrine glands, and the myxocrine glands. Endocrine glands are the glands which pour their, or their product, they pour directly into the bloodstream, are called as endocrine glands. Exocrine glands put out their products into an organ through a duct, and myxocrine glands are the glands which are having functions of both endocrine as well as exocrine glands. And pancreas happens to be the
myxocrine kind of gland. Now, pancreas is further divided into various types of cells. The names are given over here: alpha cells, beta cells, delta cells, and the PP cells or the F cells. Alpha cells are responsible for the synthesis and synthesis of glucagon. Beta cell are basically insulin producing glands, insulin producing cells. Delta cells are responsible for producing the somatostatin, and F or the PP uh, are responsible for synthesizing pancreatic polypeptides. Now, all these hormones, alpha, beta, delta, etc., these are all having their own metabolic responsibilities in the body, and they carry out the metabolic milieu of the body. So, if we talk about these cells, these are all present in the body, and basically the production of glucagon and insulin, these maintain the homeostasis of glucose in our body as a whole. So if you talk about the diabetes type 1, it is occurring in the body when the pancreas cannot produce insulin, which is a hormone essential for moving the glucose from the blood into the cells. Now, I would like to just mention here, and in the layman terms, I would like to tell you that whenever we take food, the food is ultimately, whether it be a carbohydrate or be it any other thing, it is ultimately converted into glucose, because glucose happens to be the energy currency of the body. And just like if you want to go to the market and spend anything, you have to shell out rupees. So rupees happens to be the currency, and then only you can buy something from the market. Similarly, if you want your muscles to move, you will ultimately require energy to move the muscles, and this muscle energy is ultimately derived from the energy currency of the body, which is ultimately glucose. So glucose happens to be the ultimate target of all the catabolic activities in the body, if they are food originating, of course. And this glucose is ultimately utilized by the cells after they enter the cell. And insulin happens to be the gatekeeper who checks the identity card of a person and let the person inside a room or inside a building. Similarly, until and unless insulin comes and binds to the insulin receptors of the cell, the glucose cannot enter into the uh, body cells from the blood. सो ग्लूकोज का सेल के अंदर आने के लिए जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है आपका इंसुलिन. So yadi if insulin is not being produced by the body or not being produced by the pancreas, then the blood will be full of glucose, because metabolic activity का सारा glucose blood के अंदर पंप हो जाता है, because blood उसको पूरी body में पहुंचाता है. It is the responsibility of the blood to collect all the glucose from the catabolic sites and send it to the rest of the body. तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, और चूंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है, सिंस इंसुलिन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर this glucose which has been produced as a result of metabolic activities remains in the blood के अंदर ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड से वो निकल करके सेल्स में नहीं जा पाएगा. I hope you understand. So, this insulin is essential for moving glucose from blood into the cells. And since insulin is not present, therefore the glucose will not move from the blood into the cells and therefore remain in the blood itself. Okay, so as a result of this, as a result of non-produced production of insulin, the level of glucose in the blood rises above the normal levels. यानी जितना उसको होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ब्लड के अंदर पहुंच जाता है. It is an autoimmune disorder in which the body makes antibodies that attack insulin producing cells in the pancreas. यानी कि एक प्रकार से ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिससे हमारी बॉडी के ही एंटीबॉडीज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग अल्फा सेल्स को किल कर देते हैं एक तरीके से, जिससे कि अल्फा सेल्स फर्दर अब बीटा सेल्स फर्दर अब कभी इंसुलिन नहीं बना पाएंगे. Okay, so it is usually diagnosed in children and in young adults, and therefore it is also called as juvenile diabetes or young age diabetes or young onset diabetes or early onset diabetes. Okay,
and the people with who are having type 1 diabetes, they must be supplied by insulin through a injection or through a osmotic pump or through a insulin pump. So usually ये बच्चों में होता है, and unfortunately I have both the type of diabetes cases in my family. My young niece, my brother's daughter, she was 11 years old when she had an autoimmune disorder, and her pancreas lost all the beta cells, and as a result she is on insulin diet, or on the supply of insulin since her 11 years age of childhood, right? So she's a diabetic, but she's type 1 diabetic. The earlier classifications of this type of diabetic is also termed as insulin dependent diabetes mellitus, that is IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. So basically, type 1 diabetes is the diabetes in which the patient is to be supplied with insulin externally. उसको बाहर से जिंदगी भर के लिए इंसुलिन हमको देना होगा. ये होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज. सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीज, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं टाइप 1 टाइप 2 के आपस में, वो आप नोट करेंगे. Type 2 diabetes is the most common type of disorder amongst diabetes also. Diabetes type 1 के केसेस काफ़ी कम हैं, diabetes type 2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. और इनफैक्ट जो ज़्यादातर डायबिटीज़ लोगों को होती है खास करके पोस्ट एज में, because of various metabolic disorders, that is usually type 2 diabetes. This is also termed as non-insulin dependent diabetes mellitus. Non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM इसको बोलते हैं. ये क्यों होता है? It happens because either the body does not produce enough insulin or the cells ignore the insulin. यानी कि या तो बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है, बीटा सेल्स होते तो हैं पर अपना काम या तो ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं, या तो जितनी मात्रा में इंसुलिन बनाना चाहिए उतना नहीं बना पाते हैं, या फिर जो इंसुलिन बन रही है दैट इंसुलिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्स. यानी रिसेप्टर पर जहां पे इंसुलिन को पहुंच करके अपना एक्शन करना है, वो रिसेप्टर आपकी इंसुलिन को पहचानने से मना कर देते हैं या उसको वो नहीं पहचान पाते, इग्नोर कर देते हैं. So when this happens, when glucose builds up in the blood instead of going into the cells, तो यदि ऐसा हो जाए कि आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाए, ठीक है, और सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पा रहा, तो इसकी वजह से दो चीजें हो सकती हैं. पहला, जिन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए था उन तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाया, सो द बॉडी सेल्स मे बी स्टार्व्ड फॉर एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी की भारी कमी हो जाएगी. एंड सेकेंडली क्या होगा, चूंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, उससे क्या होगा, ओवर द टाइम, जिसके बारे में बात कर रहा था, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में हर्ट द आईज, द किडनीज, द नर्व्स और इवन हार्ट. ये चार जगह पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ सकता है. ये क्या क्या होते देखिए जरा. सबसे पहले मैंने कहा आईज, किडनीज, नर्व्स और हार्ट. आईज में यदि डायबिटिक प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. यदि वो किडनीज में होता है तो हम उसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सिमिलरली अगर वो नर्व्स में होता है तो हम उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी. एंड लास्टली अगर हार्ट में होता है तो डायबिटिक कार्डियोपैथी होती है. हालांकि इट इज नॉट टर्म्ड एज कार्डियोपैथी, बट उसके और फर्दर रिपरकशंस या फर्दर प्रॉब्लम्स होते हैं. सो अभी अभी हमने देखा कि यदि ग्लूकोज का लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है, यदि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहता है तो. फॉर एग्जाम्पल आई में हमको पता है हमारा जो आंखें हैं उसके अंदर दो प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर. तो यदि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां भी पहुंचेगी, एंड एज ए रिजल्ट आंखों के अंदर जैसे शक्कर में बढ़ जाए तो ऑस्मोसिस होता है ना, वैसे आंखों के अंदर भी रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा प्रोसेस होगा, एंड एज ए रिजल्ट आंखों के अंदर जो लिक्विड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और आंखों के अंदर टेंशन बढ़ जाएगा. आंखों के अंदर जो ऑप्टिक टेंशन है, ऑक्यूलर टेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपका बढ़ जाएगा, एंड रिजल्ट आंखें खराब होने का खतरा होता है इन केस ऑफ डायबिटीज, इन केस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, बोथ, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो. लेकिन कब होता है ये जरूर हमको ध्यान ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अभी मैं जलेबी खा लूं, कम से कम आधा किलो जलेबी खा लूं या एक पाव जलेबी खा लूं, तो
या फिर कोई मीठे गुलाब जामुन या कोई बहुत सारा मीठा ही पी लूँ, तो मेरे ब्लड में भी कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन क्या मुझे डायबिटीज़ कहा जाएगा या मुझे डायबिटिक कहा जाएगा? यदि उस समय ब्लड में मेरे शुगर जांच हो जाए, तो नॉर्मल लेवल से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मिलेगी, 300 या 400 के लेवल तक भी ग्लूकोज मिल सकती है। बट क्या ऐसा पेशेंट या ऐसा प्रेजेंटेशन वाला व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एक्यूट कंडीशन है और डायबिटिक इज ए क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट क्यों है? क्योंकि कुछ समय बाद जब मेरी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, तो ब्लड जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ भी ग्लूकोज है, तो वो हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज हो जाएगा और या तो सेल्स के अंदर चला जाएगा या फिर यूज हो जाएगा, या तो डिपॉजिट हो जाएगा फैट्स के रूप में या फिर बर्न हो जाएगा एनर्जी के रूप में। तो वो थोड़ी देर बाद ये जो एक्यूट कंडीशन है नॉर्मलाइज हो सकती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, वो चाहे टाइप 1 डायबिटिक हो चाहे टाइप 2 डायबिटिक हो, आपका पेशेंट का वो जो ग्लूकोज का लेवल है वो कॉन्स्टेंटली एलिवेट रहेगा लंबे लंबे समय तक, यानी हमेशा ही या फिर हमेशा ही। तो ऐसे केसेस जो है आपके एक्यूट केसेस नहीं कहलाते, ये दीज केसेस आर टर्म्ड एज chronic cases of elevated blood sugar level and therefore they are termed as diabetic patients or diabetes mellitus. तीसरे प्रकार का जो डायबिटीज है, अब इसके बारे में बता दूं, दिस इज जेस्टेशनल डायबिटीज। ये स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वीमेन को होता है और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है और उसके बाद फिर ये डिसअपियर भी हो सकता है। यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किसी महिला में कुछ समय के लिए डायबिटिक लक्षण देखे जा सकते हैं, बट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज ओवर यूजुअली दीज सिम्टम्स पास ऑन और ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो दैट इज टर्म्ड एज गेस्टेशनल डायबिटीज एंड दैट इट इज नॉट क्लासिफाइड एज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस तो जो है वो केवल टाइप 1 एंड टाइप 2 ही होते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज वो है जिसमें आपकी बॉडी में अल्फा सेल्स है ही नहीं, सॉरी बीटा सेल्स है ही नहीं, और बीटा सेल्स नहीं होने की वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। उस केस में आपको डायबिटीज बाहर, आपको इंसुलिन हमको बाहर से देना होगा एंड देयरफॉर इट विल बी टर्म्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आईडीडीएम, या टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती तो है पर या तो वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या तो एडिक्वेट क्वांटिटी में इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, या फिर द सेल्स और द रिसेप्टर्स आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज और नॉट एबल टू बाइंड विद द इंसुलिन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। सो इंसुलिन इंसुलिन बहुत बार हमने बोला, सो नाउ लेट अस लुक एट इंसुलिन, व्हाट इंसुलिन इज एक्चुअली। Insulin is a pancreatic hormone and it is a specific anti-diabetic agent, स्पेशली फॉर टाइप 1 डायबिटीज। अभी हमने बात किया कि टाइप 1 जो पेशेंट है उसको लाइफ लॉन्ग हमको इंसुलिन देना होगा बाहर से, तो डेफिनेटली एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में हम उसको इंसुलिन दे रहे हैं। व्हाट इज ह्यूमन इंसुलिन? ह्यूमन इंसुलिन इज अ डबल चेन प्रोटीन with a molecular mass around 6000 and it contains 51 amino acids in two chains, the chain A which consists of 21 amino acids and chain B that consists of 30 amino acids, and these are bound together by disulfide bridges. Now there are three disulfide bridges. Two of them are intramolecular and one of the disulfide bridges intermolecular. So if I show, if you can see over here, that this bond, disulfide bond, is only in the ring A. Therefore, it is termed as inter chain or inter disulfide bridge, and these two disulfide bridges are intra chain, right? So disulfide, there are three type of disulfide bonds that are bridges present, which you can visualize over here. Chain A consists of 21 amino acids and chain B consists of 30 amino acids which are bound together by disulfide bridges. Now the amino acid sequences in the structure of insulin, if we discuss about them, we will understand that why this problem of insulin is occurring and why we are able to supply insulin to the patient externally also. So in beta cells, insulin is synthesized from pro-insulin precursor molecule. Pro-insulin molecule actually consists of 3 domains, यानी बेसिकली उसके अंदर 3 चेन्स होती हैं। अगर मैं स्पष्ट भाषा में अगर आपको पहले समझा दूं
कि बेसिकली जो प्रो इंसुलिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ए, बी और सी 3 प्रकार की चेन्स होती हैं, और हमारी बॉडी के अंदर इस सी चेन को जब हटा दिया जाता है तो केवल ए और बी चेन बचती है, एंड एज द रिजल्ट आपका प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन जाता है. So the proinsulin consists of 3 domains: a amino terminal B chain, a carboxy terminal A chain, and a connecting peptide in the middle known as the C peptide. By the action of a proteolytic enzyme known as prohormone convertase PC1 and PC2, as well as the exoprotease carboxypeptidase E, this C chain is removed. These modifications of proinsulin remove the central portion of the molecule, that is the C peptide, from the C and N terminal ends of proinsulin, and the remaining peptides, polypeptides, that are 51 amino acids in total, the B and A chains are bound together by the disulfide bonds. यानी इस जो बीच का C peptide chain है इसको हटा दिया जाए, अगर आप ये ध्यान से देखें. So this is the overall structure, और ये जो बड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द सी पेप्टाइड, राइट, यहां तक. एंड व्हेन यू रिमूव दिस फ्री सी पेप्टाइड, व्हेन यू रिमूव दिस सी चेन with help of beta cell peptidase enzyme, the portion that you get is insulin, which is bound together by the disulfide bonds. So this is how proinsulin is converted into active insulin. So now this is about the insulin. Now let us discuss about the other chemical agents that act as anti-diabetic drugs or anti-diabetic agents. So basically the drugs which lower the elevated amount of glucose from the blood are termed as oral hypoglycemic agents. Oral hypoglycemic agents. Oral यानी कि orally दिए जाने वाले, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करने वाले हैं. हाइपरग्लाइसीमिया उसको बोलते हैं जिस कंडीशन में आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया. और आपके एजेंट्स क्या करने वाले हैं? आपके एजेंट्स इस हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने वाले हैं, यानी हाइपोग्लाइसीमिया करने वाले हैं. देयरफॉर एंटीडायबिटिक ड्रग्स आर आल्सो टर्म्ड एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. आपके एग्जामिनेशन में, विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू दैट the examination in the examination the question can also be asked to discuss about oral hypoglycemic agents, or they may also ask discuss the oral antidiabetic agents. इस दोनों का मतलब सेम होगा. So oral hypoglycemic agents, if you classify them according to chemical classification, they are classified into the first class sulfonylureas, the biguanides, the substituted benzoic acid derivatives or the meglitinides, thiazolidinones or the glitazoles, and lastly the miscellaneous drugs which do not fall into any specific category or major class of chemical classification. So if a question is asked to talk about or to discuss about the oral hypoglycemic agents according to chemical classification, you'll have to talk about sulfonylureas, biguanides, meglitinides, glitazoles, and miscellaneous agents. Now let us talk about these agents one by one. The first category of the drugs is sulfonylureas. Now the structure of urea, you must all remember, is NH2CONH2. Okay, that is urea. NH2CONH2. So if you look at this molecule, what you are finding, this is NH2, this is CO, this is NH2. Here one H is substituted or replaced by a R, and on the other side the other H is replaced by a sulfonyl moiety. So this is sulfonyl moiety, SO2 and this remaining portion. So this is sulfonyl. That is why the name of this category is sulfonylureas. Ultimately these are termed as sulfonylureas. And you will be having two types of substitutions on this molecule. The first one is this R and the second one is this R1. So if you look at this classification, you find various drugs in this category. The drugs in this category are carbutamide, tolbutamide, acetohexamide, glibenclamide, and glipizide. Out of these, the major drugs of this category that are commonly used in today's world are glibenclamide and glipizide. In glibenclamide, the position R is occupied by a cyclohexane.
and R1 with the molecule that you can find over here. Similarly, in glipizide also, or glipizide, this is again a cyclohexane moiety on the position R, and this major moiety on the other side R1. So if you attach these R and R1 on this original molecule of sulfonylurea, you will get the structures of glipizide as well as glibenclamide. I suggest you all to draw these structures in your class when you in your copies when you get my presentations. The other category is the second category is biguanides. Now, biguanides is again a very important category of drugs, and most of the drugs that the diabetic patients across the world are eating or are consuming are belonging to this category, because metformin happens to be one of the most popular molecule of anti-diabetic or oral hypoglycemic agents. So this is the structure of biguanides. Here also again we are having only two substitutions, R and R1, and these are occupied in case of metformin. These are occupied by simple methyl moieties in case of metformin. And metformin is the most successful and widely consumed uh, molecule for anti-diabetes. Now the next category is maglitinides. Maglitinides are basically substituted benzoic acid derivatives. Here we can see that this particular moiety, which you will find in all the molecules, is the benzoic acid. So these are ultimately termed as benzoic acid derivatives. Here you can find, here also you can find a substituted benzoic acid. Okay, so the drugs in this category are maglitinides, repaglinide, and netaglinide. So these are the drugs of this category of substituted benzoic acid derivatives. Now the next category, which is again a novel category, or let us say one of the latest developments, though it is around 10-year-old molecule, but still these are to be mentioned. These are mentioned as the newer categories of drugs. This is thiazolidine diones. Thiazolidine diones or glitazones are again being utilized, and the important molecules of this category are pioglitazone and rosiglitazone. Here also only one substitution on this particular R position is done, and the rest molecule is thiazolidine diones. Thiazolidine diones are also one of the very important categories of antibiotic or antimicrobial agents. For example, linezolid is one of the thiazolidine diones, the ultimate um, antimicrobial agent. So that is all from my side in the today's class, because time is again short. So I will discuss the remaining portion and the SAR of this category in my next class. I thank you all again for joining this class of anti-diabetic agents. I am Dr. Sukhwant Singh, Associate Professor at SITS Pharmacy of the Stage Group. Thank you very much and hope to see you in my next class. Thank you.